नमस्कार वेलकम टू श्रीकाय एकेडमी आज क्लास रे आमे क्लास 7 रो सोशल साइंस बुक आवर पास्ट 2 रो फर्स्ट चैप्टर टी को देखिबा। यह होची सीबीएसई रो क्लास 7 एनसीईआरटी बुक सोशल साइंस आउ तार ना होची आवर पास्ट 2 आमे समस्त एटा जानि छे तार फर्स्ट चैप्टर टी को आमे आज पढिबा। सो हिस्ट्री माने आमर इतिहास विषय एटा हमको रिप्रेजेंट करे आमर इंडिया आउटसाइड इंडिया पूरा वर्ल्ड रो इतिहास हमको पढ़िबा पई पड़े। सो हिस्ट्री रे ओडिया होची इतिहास। तो आज आमे आवर पास्ट 2 क्लास 7 रो हिस्ट्री बुक रो फर्स्ट चैप्टर टी को देखिबा कि एथरे कोन अछि। सो देखिबा एथरे कोन लिखा है फर्स्ट चैप्टर रो हेडिंग टी लिखा है इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 इयर्स। तो से कहि छि कि 1000 वर्ष रे कोन कोन चेंजेस आसी छि आम हिस्ट्री रे से विषय रे आमे चैप्टर टी रे पढिबा। सो द फर्स्ट थिंग इट इज रिटन दैट इंट्रोडक्शन एंड ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 इयर्स। तो 1000 वर्ष रे कोन कोन चेंजेस आस्ते सेटा आमे एतरे देखिबा। सो चलंतु देखिबा कोन लिखा जाय छि। लिखा जाय कि टेक ए लुक at map 1 and 2. Map 1 was made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Idrisi. The section reproduced here is a detail of Indian subcontinent from his larger map of the world. तो এটা कहा जाय कि आरब जियोग्राफर द्वारा ये मैप टी को तैयारी करा जाय ये मैप टी रिप्रेजेंटेशन जो करा जाय एटा होचे मैप 1। मैप 1 देखो आपण पिक्चर देखि पारबे मैप 1 टी की आरब जन जियोग्राफर ऑल इद्रिसी द्वारा तैयारी करा जाय छे इन 1154 सीई। आउ से मैपटा कौन रिप्रेजेंट करुची डिटेल ऑफ इंडियन सबकंटिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो तांकर वर्ल्ड मैप रो गोटे अंश जोटा कि इंडियन सबकंटिनेंट को रिप्रेजेंट करुची सेटा को से एथरे मैप रे रिप्रेजेंटेशन करा जाय छे। सो आबे हम देखिबा एटे कौन लिखा जाय छी। The map 1 representation लिखा जाय कि a section of the world map drawn by the geographer Al-Idrisi in the 12th century showing the Indian subcontinent from land to sea। तो से कहला कि जो मैप 1 टी के आमे देखि पारछे वर्तमान जहार पिक्चर टी सेटा Al-Idrisi जने अरब रे जियोग्राफर सेटा को बनैतिले 12th सेंचुरी रे सेटा को से बनैतिले एंड एटा इंडियन सबकंटिनेंट लैंड टू सी माने भूमि ठू सागर पर्यंत एटा सेतरे शो करा जायति। सो ये आम मैप 1 को चित्र में देखिपार तार पिक्चरटा आप देखिपार। चलो देखा कौन लिखाई मैप 2 वाज मेड इन 1720s बाय ए फ्रेंच कैर्टोग्राफर। सो साइड रे कैर्टोग्राफर माने लिखी दीजिए कैर्टोग्राफर माने हूँ ए पर्सन हु मेक्स मैप्स। सो यू कैन अंडरलाइन दिस वर्ड हु इज अ कैर्टोग्राफर। सो कैर्टोग्राफर इज अ पर्सन हु मेक्स मैप्स। सो चलन देखिबा कौन लिखाई छी। मैप 2 वाज मेड इन 1720s बाय ए फ्रेंच कैर्टोग्राफर। तो फर्स्ट मैप टी बनै चंदी अरब जियोग्राफर आउ सेकंड मैप टी बनै चंदी फ्रेंच कैर्टोग्राफर। The two maps are quite different even though they are of the same area। जदियो सेम एरिया रो बना जाय छी दुई जाक मैप बट दुईटा जाक डिफरेंट देखा जाउ छी। In Al-Idrisi's map, South India is where we would expect to find North India and Sri Lanka is the island at the top. Place names are marked in Arabic. So, ये तला मैपटा जो देखुछन्ते एटा होची सेकंड मैप 2 रो रिप्रेजेंटेशन तार पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन आपण देख परिबे जोटा कि फ्रेंच कार्टोग्राफर को द्वारा तैयारी करा जायछि। द मैप 2 टी कोन The subcontinent from the early 18th century Atlas Novio of Guillemot DLC। सो एटा होची सेकंड मैप जोटा कि फ्रेंच रे लिखा है वर्ड टी। सो फ्रेंच रो कार्टोग्राफर ए सेकंड मैप टी की तैयारी करछन एंड फर्स्ट मैप आ सेकंड मैप भितर बहुत तफात अछि बोले एथरे लिखा जाय छी। So Sri Lanka is the island at the top. Place names are marked in Arabic and there are some well-known names like Kannauj in Uttar Pradesh. Map 2 was made by nearly 600 years after Map 1.
During this period, information about the subcontinent had changed considerably. So कौन से लिखी कि जदियो दीटा जाक मैप सेम पीरियड आउ सेम जगार सेम पीरियड नुहे आउ सेम जगार जदियो सेटा सेम एरिया और सेम जगार बट जेहेतु कि से दीटा जाक मैप बनैला भितर 600 इयर्स रो डिफरेंस अच्छी 600 वर्षर डिफरेंस अच्छी तो से दीटा जाक मैप रे रिमार्केबल डिफरेंस अच्छे बिकज 600 इयर्स किसी कम समय नुहे 600 वर्ष भितर बहुत किसी चेंजेस तार जियोग्राफिकल कंडीशन रे हो कि भी हो चेंजेस बहुत मात्रा रे हो जाइए बोली से रिप्रेजेंट करछि। सो नेक्स्ट देखिबा कोन दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयज। सो मैप गुड़ा क्या यूज करा जाए कौ मैंने यूज करते मैप्स गुड़ा आगु यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स जो मैंने पानी रे बा जल पथरे यात्रा करती से मैप टी को भल भाव में यूज करते सो दैट मैप से रास्ता जानवर और डायरेक्शंस जानवर हेल्पफुल होता। सो नेक्स्ट चलते देखा Equally important is the fact that the science of cartography differed in the two periods. When historians read documents, maps and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. So next channel देखिबा new and old terminologies. If the context in which information is produced changes with time, what about language and meanings? Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. तो से कहि कि हिस्ट्री गुड़ाक जो सब लैंग्वेज रे आमर स्टोर करा जाए रेकर्ड करा जाए से सब लैंग्वेज गुड़ाक विथ टाइम चेंज हो जाए तो सेटा को बुझीबा से लैंग्वेजटा को जानिबा तार ट्रांसलेशन हवा जरूरी थाए। सो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस व्हिच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द years. Medieval Persian, for example, is different from the modern Persian. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary, the meaning of the words also change over time. तो से कहला कि जो सब लैंग्वेज यूज होचे हमर हिस्ट्री को रिकॉर्ड करबा पय से सब लैंग्वेज गुडा ओवर द टाइम चेंज हो जाउची तार ग्रामेटिकल जिंस तार वोकैबुलरी तार रिप्रेजेंटेशन विथ टाइम चेंज हो जाउची। Take the term Hindustan, for example. Today we understand it as India, the modern nation state. When the term was used in the 13th century by Minhaj-e-Siraj, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna. So से रिप्रेजेंट कला कि हिंदुस्तान को एवं वर्तमान आम इंडिया बोली बुझुचु संपूर्ण इंडिया को आम हिंदुस्तान कहूँ बट 13th सेंचुरी रे एटा को केवल पंजाब हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना को ही केवल हिंदुस्तान बोली बुझा जाउथिला। से लिखिछे when the term was used in the 13th century by Minhaj-e-Siraj, a chronicler who wrote in Persian, जी कि पर्सियन रे लिखुतिले, he meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Jamuna. वर्तमान आम जोटा को पूरा इंडिया को हिंदुस्तान कहूचे आगुरु केवल पंजाब हरियाणा आउ किछिटा जगह गंगा जमुना भितर जगह को हिंदुस्तान बोली कहुला। ही यूज्ड द टर्म So he used the term in a political sense for lands that were part of the dominions of the Delhi Sultan. The areas included in this term shifted with the extent of sultanate, but the term never included South India. तो से कहले कि से जगह रे से समय रे से केवल से एरिया गुड़ा को हिंदुस्तान कह जाउतला बाकी सब एरिया को हिंदुस्तान कह जाउ नथिला बिकॉज़ सेटा सुल्तान मानक कबलित थिला सुल्तान मानक अंडर रे थिला तो पॉलिटिकल सेंस रे से टर्म टा को यूज करथिले। So he used the term in political sense for the lands that were a part of the dominions of the Delhi Sultan. So Delhi Sultan का पार्ट अंडर रे जो सब पार्ट्स गुड़ाक थिला पॉलिटिकल सेंस रे से सेटा को हिंदुस्तान बोली रिप्रेजेंट करथिले। The areas included in this term shifted with the extent of sultanate, but the term never included South India. तो से टर्म रे साउथ इंडिया को इंक्लूड करा जाय नथिला। By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent.
तो कौन होगा 16th सेंचुरी रे बाबर कौन करे ना हिंदुस्तान टर्मटा को यूज कले कौन डिस्क्राइब करने जियोग्राफी डिस्क्राइब करने द फॉना एंड द कल्चर ऑफ द इनहैबिटेंट्स तो इनहैबिटेंट्स माने से जगह रोता लोक बासिंदा माने केमती रोचनी से सब कॉन्टिनेंट से रिप्रेजेंट करने हिंदुस्तान टर्म यूज कले आज वी विल सी द लैटर इन द चैप्टर दिस वाज somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusrau used the word Hind. While the idea of geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today. So, से कहला कि आगुर हिंदुस्तान जहाँ मीनिंग थिला वर्तमान से कम्प्लीटली चेंज हो जाए वर्तमान संपूर्ण इंडिया को आम हिंदुस्तान बोली कहूचे बट आगुर दिल्ली सुल्तान का अंडर थी किसी एरिया को ही केवल हिंदुस्तान कहुला पॉलिटिकल सेंस रे वार्ड को यूज करा हिस्टोरियंस टुडे हैव टू केयरफुल about the terms they use because they meant different things in the past. For example, the simple term like foreigner, it is used today to mean someone who is not an Indian. In the medieval period, a foreigner was any stranger who appears, say in a given village, someone who was not a part of the society or the culture. अच्छा वर्तमान आमे foreigner बोली क्या कहूँ इंडिया बाहर लोगों को आमे foreigner बोली कहूँ आम राज्य बाहर लोक आम फरेनर कहूने बट इंडिया बाहर लोक फरेनर बोली कहूचे बट आगे आगे से कौन होता ना निज एरिया बा कल्चर बा लाइक आम ओडिशार लोक ओडिशा बाहर लोक फरेनर बोली कहुला आगुरी सो द समवन हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी और द कल्चर तांको फरेनर बोली कहुला बट वर्तमान ए टर्म माने कंप्लीटली चेंज हो जाए वर्तमान आम क्या फरेनर बोली कहूचे ओनली जो मैंने आउट ऑफ इंडिया लोक से आम फरेनर बोली कहूचे In Hindi, the term Pardesi might be used to describe such a person and the Persian Ajnabi. A city dweller, therefore, might have regarded a forest dweller as a foreigner. तो से कहला कि जदि फॉरेनर पूर्व टर्म्स आम कंडीशन देखा हिंदी रे ताको कह जाए परदेसी आ पर्सियन कह जाए अजनबी तो आम देखा सिटी रोकवा लोक गाँव में रोकवा लोक को फॉरेनर कहीपर जदि सेमिति भाव आम देखा But two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have had different religions or caste backgrounds. तो यहाँ फॉरेनर डिफरेंट माने जोटा आगुरी चलता बट बर्तमान आम आउट ऑफ इंडिया लोक फॉरेनर बोली कही था देन नेक्स्ट हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस हिस्टोरियंस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सोर्सेस Historians use different types of the sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. Last year, for the example, you read about the rules of the Gupta dynasty and Harshvardhan. In this book, we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750. You will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. They will rely on the coins, inscriptions, architecture and textual records for information. So, it कहला कि 700 वर्ष रु 1750 वर्ष पर्यंत 700 to 1750 पर्यंत 1000 ईयर आमर ये रिप्रेजेंट करा से विषय से पढ़े हिस्टोरियन आउ तांकर सोर्सेस जहाँ जहाँ सब आम इनस्क्रिप्शन अच्छी जहाँ सब रेकर्ड कर से सोर्स रू नहीं आम 1000 ईयर जहाँ अच्छी हिस्ट्री से आम पढ़ा We will notice some continuity in the sources used by the historians for the study of this period and they will rely on the coins, inscriptions, architecture and textual records for the information. But there is also considerable discontinuity. The number and the variety of textual records increased dramatically during this period. They slowly displaced other types of available information. So, से लिखला कि the number and the variety of textual records जहाँ जाओ से उठिला ड्रामेटिकली से गुड़ाक इंक्रीज हो चलला तो सेटा को यूज करके आम तार हिस्ट्री विषय में जानूचे थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल People used it to write holy text, chronicles of rulers, letters and teachings of saints, petitions, judicial records and for the registers of the accounts and the taxes. से कहला कि पेपर गुड़ाक जेहेतु कि कम रेट होगला जहाँ सब रेकर्ड कर सब आगुरी पेपर रेकर्ड्स होता Manuscripts were collected by the wealthy people, rulers and monasteries and the temples and they were placed in the libraries and archives.
And these manuscripts and documents provide a lot of detailed information to the historians, but they are also difficult to use. So se lekhila ethi archive ro mane kono? Archive means a place where documents and manuscripts are stored. Today all national and state government have archives where they keep all their old official records and transactions. So old official records or transactions जोटी रहे manuscripts जोटी रहे से जगह को archive बोली कहा जाए. लाइब्रेरी बुक रहे आर्चिव्स रे डॉक्यूमेंट्स रहे जोटा के ओल्ड बा नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एते. These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to the historians, but they are also difficult to use. ये जो manuscript गुड़ा store हेगी था समाने बहुत information दियंती historian मानंगो, but difficult to use हिते क्या ना गद्दा गद्दा documents था से सब को collect करी तब से information निकालिबा difficult हिते. So आज क्लास रे आमे एतिक हिस्ट्री पढ़िबा धीरे धीरे आमे यार पार्ट्स पर पार्ट्स पढ़िबा एक्सरसाइज पर्यंत पढ़िबा. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. एहीपरि भल भल एंड ओडिशार बेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पाइबा पई आम चैनल श्रीका एकेडमी को सब्सक्राइब करंतु. श्रीका एकेडमी ऑफलाइन एवं ऑनलाइन क्लासेस को जॉइन करबा पई कॉल करंतु 8114789448 नंबर रे. वी प्रोवाइड क्लासेस फॉर CBSE ICSE ओडिया मीडियम स्टूडेंट्स क्लास 1 to class 10 and we provide classes for all subjects math, science, English, social science, Hindi or Sanskrit. Our location is Pokariput, Bhubaneswar. श्रीका एकेडमी ऑफलाइन एवं ऑनलाइन क्लासेस को जॉइन करबा पई कॉल करंतु 8114789448 नंबर रे. ओडिसा रे सबठार बेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पाइबा पई श्रीका एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु. प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल श्रीका एकेडमी. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग.